Hello and welcome back. My name is Hasib. Today in this video we're going to talk about how to file the interest income on PFMS. If you're operating an agency with a scheme registered with a bank account, obviously the most of the bank accounts are usually saving bank accounts. So in a saving bank account for any unspent balance, an interest income is generated after a due period of time, and that interest earned is to be filed on PFMS as interest income. मोस्टली एजेंसी यूजर्स गलती क्या करते हैं जब भी आपका इंटरेस्ट जनरेट होता है आप बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं एंड यू चेक द अमाउंट कि कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ है वो डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंस में वो अमाउंट ऐड करते हैं बट दैट्स नॉट द राइट वे टू डू जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं किसी भी अमाउंट के लिए एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो आपको एज एन इंटरेस्ट इनकम शो करना होता है सो दैट यूर मिनिस्ट्री एंड योर फंडिंग एजेंसीज कैन नो इन रियल टाइम कि आपने ये इंटरेस्ट earn किया है for the unspent balance that's parked in your bank account. So what's the proper procedure for filing the interest income on PFMS? First of all, you should know the definition of the interest income. It's the amount that's earned as an interest for any unspent balance that lies in the saving bank account for which is registered for a scheme in an agency. So first of all, you will log in with your agency DO, that's data operator. आप डेटा ऑपरेटर के अकाउंट के थ्रू लॉग इन करेंगे एंड देन यू विल विजिट द पेज माय फंड्स एंड इंटरेस्ट इनकम पेज यू हैव टू ओपन दैट उसमें आप ऐड इंटरेस्ट इनकम पे क्लिक करके वहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा बट आई विल शो दिस इन द वीडियो एज वेल एंड देन यू विल एंटर द रोका डिटेल्स जो भी डिटेल्स होंगी जितना भी आपने इंटरेस्ट जनरेट किया है किस डेट से किस डेट तक इंटरेस्ट जनरेट हुआ है and after that you will select the scheme obviously and after providing in the narration there उसके बाद आप सेव करेंगे सेव करने के बाद आप फिर से जाएंगे माय फंड्स इंटरेस्ट इनकम पेज पे वहाँ पे आपको वो एंट्री शो हो जाएगी you have to open up that entry and then if all the details are correct you have to submit that entry for the approval और अप्रूवल के लिए सबमिट करने के बाद आप अपने डीए यानी कि डेटा अप्रूवर को इन्फॉर्म करेंगे एंड ही विल बी नीडेड टू लॉग इन विथ हिज एजेंसी डीए अकाउंट एंड आफ्टर लॉगिंग इन ही हैज टू विजिट द सेम पेज वाया माय फंड्स इंटरेस्ट इनकम वहाँ पे उनको एंट्री शो हो जाएगी एंड ही हैज टू ओपन अप दैट एंट्री देयर after verifying all the details of the interest statement that has been put in by the agency DO उसके बाद वो उस एंट्री को ओपन करके अप्रूव करेंगे एंड आफ्टर अप्रूविंग दैट एंट्री जो भी आपने अमाउंट शो किया था दैट अमाउंट विल गेट ऑटोमेटिकली एडेड विद द करंट ओपनिंग बैलेंस अमाउंट दैट्स प्रेजेंट इन योर एजेंसी एंड these steps I will show you practically on the website as well. So I'm taking you to the live website. After logging in with your data operator account of your corresponding agency, you can confirm the user type right here. You have to make sure that you have logged in with your agency DO account. And इस account के through आप interest income statement add करना start करेंगे उसके लिए आप जाएंगे My Funds के option में then you will browse for interest income इस पे आप क्लिक करेंगे जो आपका next page open होगा that will be manage interest income if you have done any past transactions of creating interest income files though that list will be shown to you right here but if it's this is the first time for you then there will be no records found right here and to create the interest income file you have to click on the add interest income page will be opened up for you and by default if the agency has only one bank account registered with only a single scheme then obviously that bank account will be selected right here by default but if you are operating multiple types of schemes registered with different bank accounts अगर आप multiple schemes operate कर रहे हैं और हर scheme के लिए आपका different bank account है then you have to make sure कि आप वो specific bank account select करेंगे जिसका आप interest income mention कर रहे हैं and after selecting that bank account you need to select the period of interest generated for the unspent balance और वो रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए वो आपको बैंक स्टेटमेंट से भी पता चल जाएगा कि आप किस डेट से किस डेट तक आपका इंटरेस्ट जनरेट हुआ है एंड इन आवर केस द डेट्स आर 1st March sorry it's 1st January from period and to period we have 31st March
So this is the total amount that you have to mention here. कितना total interest generate हुआ है इस account में, वो आप यहाँ पे mention करेंगे. And after selecting this total amount, जैसे आप expenditure file करते हैं, आप अगर बल्क में किसी का एक्सपेंडिचर फाइल क्रिएट करते हैं, देन द टोटल जो आप अमाउंट मेंशन करते हैं वो आप ब्रेक करते हैं हर किसी अलग अलग वेंडर के लिए. सेम केस यहाँ पे भी है. अगर जो आप इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, if that interest income is for different types of schemes that are registered for the same bank account number, you have to select the scheme each time here. आप यहाँ पे पहले सिलेक्ट करेंगे एक स्कीम, इसमें से कितना डिविडेंड उस स्कीम के लिए जनरेट हुआ है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. In our case we have only one scheme operating here, that's LA29, वो हम select करेंगे. और ये जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ है पूरा इसी स्कीम का है, इसलिए हम पूरा अमाउंट इसी में मेंशन कर रहे हैं. After this step you have to provide in the narration here because that's mandatory. After providing in the narration, you need to click on the submit option here, and the voucher number gets generated for this interest file. And while clicking on the OK, you can see that interest income details have been saved successfully. You can browse in for the same voucher number right here by going back to the My Funds interest income option. And you can see the file right here that has been just created, and the stats is showing that this has been just created. And to submit this file, you need to click on the hyperlinked bank account number, and you can check the fields again. If all the fields are correct to you, then you need to click on the submit for approval, and this file will be pushed to the data approver account of the corresponding agency. Okay, after logging in with your data agency data approver account, you can browse for the entry that has been just created by your agency data operator. जो interest statement का फाइल आपने क्रिएट किया था डेटा ऑपरेटर के अकाउंट से, और आपने सबमिट भी किया है वहाँ से. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक श्योर कि पहले आप क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप वही एंट्री सबमिट करते हैं अप्रूव के लिए. And then you need to inform your data approver, and he has to log in with his data approver account, and you can confirm that user type from here right here. Make sure that this is the agency DA logged in, and क्योंकि agency data approver ही फिर उस entry को approve करते हैं. तो जो statement आपने add किया था वो आप फिर से browse कर सकते हैं in my funds, then interest income page, and the entry that has been just created and submitted for the approval will be shown right here, displayed right here. आपको यहाँ पे hyperlinked bank account number पे click करना है, and all the details will be displayed right before you. And वो details confirm करने के बाद आप फिर approve या reject कर सकते हैं, depending कि अगर पूरी सभी जितनी भी details हैं इसमें वो सभी correct हैं, तो आप you can approve this file, or you can reject this file if अगर इसमें कोई गलती है. And after verifying all the details, you need to click on the approve option here and provide in any remarks that you want regarding this, and click on the confirm. So the notification that will be displayed at the top is that request has been approved successfully. So the amount that has been just entered as the interest income will be automatically added with the current opening balance of your agency. So ये अमाउंट आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर एनी एक्सपेंडिचर पर्पसेस, और यू कैन रिवर्स दिस अमाउंट बैक टू योर फंडिंग एजेंसी depending upon what type of decision has been made for the interest that's generated in a bank account for any scheme. So this was all about how to file the interest income on PFMS. So make sure you also subscribe this channel for any future related content of PFMS. In the end, there is one more important thing to mention about the interest income. The amount that has been earned as an interest for any unspent balance by the agency, अगर आपने वो amount already include किया है opening balance में, then there is no need to create an interest file on PFMS for that amount. आप सिर्फ उसी amount का interest file generate करेंगे जो आपने recently earn किया और जो आपने opening balance में include नहीं किया है. क्योंकि अगर आपने opening balance में already interest income दिखा दिया था, then creating a separate interest income file will
increase the will double them well will double that amount for the agency. So you need to make sure कि अगर आपने ओपनिंग बैलेंस में ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड किया था तो उस इंटरेस्ट का आप कोई भी फाइल जनरेट नहीं करेंगे, आप सिर्फ उसी अमाउंट का जनरेट करेंगे, उसी इंटरेस्ट अमाउंट का आप इंटरेस्ट इनकम में फाइल जनरेट करेंगे जो आपने रिसेंटली अर्न किया, जो आपने पीएफएमएस पे एजेंसी में इससे पहले इंक्लूड नहीं किया था ओपनिंग बैलेंस में। तो उससे भी फिर मिसमैच क्रिएट नहीं होगा, आपका एजेंसी बैलेंस प्लस अकाउंट बैलेंस हमेशा पैरेलल में रहेगा। So you need to make sure about these two things. जो first condition है, if the interest income has already been included in the opening balance, then there is no need to create a separate entry of that interest amount on PFMS. वो interest amount आप नहीं दिखाएंगे जो आपने already include किया है opening balance में, but जो amount आपने opening balance दिखाने के बाद earn किया है वही amount आप फिर interest income में file create करके as an interest generated for that unspent balance show करेंगे. So that's all for this interest income video session. Thanks, have a nice day, and take care.